I think, first of all, thank you to all of you for being here. I really don't think you require any talent to love your country. So I think it comes naturally when you see the flag, when you feel for the country, and these roles come really naturally. Uh, but I just want to take one moment off and thank everybody on the stage here. Everybody is a fantastic partner. Monisha, Bhushan, Nora, Nikhil, Mrinal, Ritesh, fantastic writing. I think you'll win everything. Madhu, Sandeep, all of you. Kumarji, thank you for really being a fantastic partner in distributing this film and supporting us. And my two girls here who are fantastic. Vinod, thank you so much. Neeraj, thank you. Sayukta, my head of development, she's written some fantastic films. She's written Nirja, Parmanu, and Minakshi, who's been solid like a rock, and every shot she's actually stood behind me. So these are invaluable to my process. So I think it's important to recognize everybody out here. Um, all in all, fantastic film. Very excited. We're not worried about anything in this film. Very excited that the audience sees it. And Nikhil, honestly, you're the hero of this film because you've done a fantastic job. So अक्सर क्या होता है कि एक्टर क्रेडिट लेके जाता है यहाँ से बट आई थिंक you've done a fantastic job and I say this because मैंने फिल्म देखी है and I enjoyed it as an audience so I'm very happy. हमने ट्रेलर देखा है और वो जो लास्ट का शॉट था ना तिरंगा लहरा रहा है एंड द लुक इन हिज आईज दैट जस्ट किल्स इट सो आई एम श्योर उसके बारे में और भी बहुत पूरी फिल्म के बारे में बड़े सारे सवाल होंगे यहाँ पे सो वील टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल यू वंडरफुल पीपल जॉन अरे वाह जॉन सर मनीष हियर न्यूज नेशन से जॉन सर में दो सवाल थे आपसे कि हमने देखा कि लगातार जो आपकी फिल्में आई हैं कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट पर हैं जो कि किसी सोशल इशू पे रहती हैं हमेशा, तो ऐसे ही फिल्में अगर स्क्रिप्ट हो तो जॉन को अप्रोच करने से ज़्यादा आसानी होगी, ऐसा हम मान के चले? I think sometimes इसके बाद तो मेरी अगली फिल्म एक कॉमेडी है so I think I'd like to do all kinds of films. मुझे कॉमेडीज बहुत पसंद है. पागलपंती मेरी नेक्स्ट फिल्म है. So I think it's fun to do all kinds of films. लेकिन ये this kind of a subject is very very special. जॉन, हालांकि दूसरा सवाल, हालांकि हम फिल्म प्रमोशन के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक और आजकल मुद्दा है कि पानी की कमी बहुत हो गई है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं अब इसको जॉन? I think it's actually a relevant question. Very honestly, I think there's something called water harvesting, जो हम लोग ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं city में. I think if you can harvest water rightly, the city and the country can have enough water. हमें भी बहुत टेंशन होता है जब भी हमें पता चलता है कि बारिश नहीं हुई है. जब बारिश होती है हमें तकलीफ होती है. We look and say अभी flooding होगी यहाँ पे. But we don't have enough rains in this city, in this country. The rivers are going to dry up in the next 20-30 years. So it's a serious problem this country is facing. और उसके ऊपर जब महाराष्ट्र government has decided to cut 33 hectares of land in RML colony, तभी आपके दिमाग में ये होता है कि are we really thinking in the right direction or the wrong direction? Someone like me is opposed to the coastal road. I am opposed to the 33 hectares of land being cut. और आप बोलते हो कि बस उतना ही काट रहे हम लोग मेट्रो के लिए. You're displacing animals. It's ridiculous. Human beings, everybody. So it's a cause of concern. I don't understand where we are going. जॉन सर, मेरा सवाल निखिल जी और राइटर दोनों से है. जब ये हुआ था 2008 में, तब बॉम्बे में भी जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें भी जो लोग पाए गए थे उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन पाया गया था. निखिल जी, अगर आपकी बात करें तो आप काफी बोल्ड हैं और आपने डी-डे बिना किसी दुराव छुपाव के उसमें हर चीज आपने डाली. तो फिर ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में आपने जो चंद्रमोहन जी का एनकाउंटर में डेथ हुई थी, जो मारे गए थे, उसके बाद राशिद पकड़ा नहीं गया, सॉरी, उसने जो बयान दिया, राशिद का जो बयान था कि हमने जो भी किया, और उससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो एनकाउंटर था वो सच में हुआ था और अगर कोई मरा तो सिर्फ वो चंद्रमोहन जी मरे. उस वक्त अरुंधति राय से लेके ढेर सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं
उसमें केजरीवाल भी थे, उसमें दिग्विजय सिंह भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया था और बहुत आंसू बहाए थे। तो आपने अपनी फ़िल्म में, चूँकि मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत बोल्डली किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, तो इसमें पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं दिखाया गया? जिन्होंने आपको फिल्म देखना मगरमच्छ। पड़ेगा। आप जब फिल्म देखोगे, मैं आपको लेके जाऊंगा फिल्म देखने के लिए। हाँ जी, इसमें दिग्विजय सिंह है, अमर सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, सब है, जी, सब लोग है इसमें। जी, जी। सारे पॉलिटिशियंस हैं इसमें। हाँ, हालांकि मतलब अगर हाँ है, वॉच इट। John sir, your center, Rahul here from the Film Chacha. There are even more politicians, by the way. Huh? John sir, your मैं- center, राहुल here from the फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल आपसे ये था, सबसे पहले तो ट्रेलर जितना धमाकेदार है, आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी पावर पैक लगी सर। और कुछ सालों से जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं, पैट्रियोटिक फिल्म, रियलिस्टिक फिल्म, तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ और है कि जब देखा जाता है, जब चर्चा होती है कि रियलिस्टिक फिल्म, पैट्रियोटिक फिल्म की, तो दो नाम सामने आते हैं, एक जॉन अब्राहम, दूसरा अक्षय कुमार। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सर। और कुछ ऐसी भी दोस्ती होती है, बहुत कम ऐसी दोस्ती देखने को मिलती है कि दोस्ती अच्छी हो और पसंद भी दोनों की एक जैसी हो। एक ही डेट पे आते दोनों। पिछले साल आप दोनों साथ में आए थे और इस साल भी आप दोनों साथ में आ रहे थे, इस दोस्ती का क्या नाम दूं? Make some noise for the Desi boys. Killed it. No, I mean honestly, I honestly, if there was a controversy, I would have loved to create it. लेकिन अक्षय and me are very dear friends और we really get along. हम लोग ने in fact परसों ही हम लोग ने एक दूसरे को मैसेज किया. There is absolutely nothing. हम लोग सिर्फ 2 फिल्म्स रिलीज कर रहे हैं एक दिन पे. There is enough space. Audience को यही दे रहे कि we giving audience a lot of choice to choose from good films. एक तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है. At least one choice the audience has in the head कि एक फिल्म तो अच्छी है. I hope the other 2 films also are very good. That's all I can hope for. But August 15th is a great date. John, hi. This side, Ankita from Republic. First of all, here. Uh, the trailer looks promising, very nice, very amazing, Thank and you. we are looking forward for the film. My question to you is: be it Akshay in Suryavanshi, be it the Singham franchise, be Batla House for a matter of fact, कहीं ना कहीं वर्दी जो है वो अपना कमाल दिखा ही रही है एंड फुटफॉल्स जो हैं जो थिएटर्स में लोग आते हैं वो काफ़ी इंक्रीज होता है. डू यू थिंक कि जो वर्दी है या प्लेइंग अ कॉप इज अ हिट फॉर्मूला फॉर अ फिल्म? No, it's not. Content is the hit formula for a film. If your film's good, it'll run. If it's not good, it will not run. You can wear a cop uniform in a bad film, it will not run. So content is most important. John, yeah. John, with your films, you have been like pulling cars, breaking tires, and now mobile phone. So, is it like deliberately put inside the film, or it is like No, the in real demand of life, the film? in real life, I can't break everything. I really, I enjoy breaking things. So, no, but it should look believable. And I think with me, my director of Satyamev Jayate is sitting here, the cute little boy. Not little, he's quite big actually. Milap. So I mean, I feel sometimes when it looks believable on an action hero, then so be it. So that's why I think my directors make me do it, and I feel I can. निखिल Exactly. Before we saw the trailer, I said the same thing, which is कि एक एनकाउंटर वर्ड को जिस तरह से सब लोग कह रहे थे, फेंका जा रहा था कि मतलब एनकाउंटर इज ओनली बीन डन बिकॉज द पुलिस वांट्स टू create wants it's always fake. Or what if there is an encounter which is real, right? And what if there is that it took us a lot of time to read all. मैंने सारे ये पढ़े हैं, दोनों तरफ से सारे versions पढ़े हैं, and have sat with the people involved in the encounter, and we've tried to make it very very
we've tried to leave the question, answer some of the questions that you may have when you watch the film. So right now, I feel that yes, I feel that as a operation, the encounters need to happen, and they are done as well, as long as they are done genuinely, right? There are people who are corrupt. There are people who don't do it correctly. There are police forces. There's a line in the film when you watch it, which John says, which stands for the entire film. I'm not going to tell you right now. You got to watch the film for that. जी. Well, I think encounters are a necessary evil. So I think sometimes, uh, honestly, a film देखिए, you know, at least I can only speak about Batla House, a film देखिए. But there was a nexus, like you said, with our industry and the underworld. Luckily, मेरे time पे जब भी मेरी entry हुई industry में, everything was very corporate. 2003 में, उस वक्त पे इतना वो ये नहीं था with the underworld. They were on their way out, thankfully. Yeah, I would never have dealt with these idiots anyway. Controversies will happen at every stage in your life, whether you're a star, you're an actor, you're a common person. There is going to be some controversy at a level in your life. I've handled it by not reacting to it. But each person handles it very differently. There are people who get violent, who get upset, who get angry. I look at it constructively and I say, नहीं, शायद इसके पीछे कुछ होगा. Let me handle it, and I just think about it, and I go back home and think about it. So, which is why you'll never see me really having an outburst, because I process everything in my head. जॉन John. जॉन Hi, न- John. जॉन नमस्कार, मैं रेखा खान और मैं Hi, Rekha. हेलो, मैं पूरी एंटायर टीम को सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी. बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेलर है. मेरे 2 सवाल हैं. जॉन, ये फिल्म इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज़ होगी और हम सबके लिए इंडिपेंडेंस की बहुत अलग-अलग डेफिनेशंस होती हैं. कोई कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, कोई कहता है ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए, कोई कहता है कि देश पे मर मिटना. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए सच्चा इंडिपेंडेंस क्या है? Sorry, Rekha, this is like a school question. यार. नहीं, don't know लेकिन what to- अभी क्या है ना, हाँ. देखिए आज के दौर में ना, जो एक इंडिपेंडेंस है उसको लोगों ने बहुत ग्रांटेड और बहुत अलग-अलग डेफिनेशंस ले लिया है. मतलब उसको एक ग्रांटेड ले लिया है. उसको लोग सोचते हैं कि मेरी आज़ादी है, ये मेरे कहने की आज़ादी है, ये मुझे सड़क पे उतरने की आज़ादी है. लेकिन आज़ादी के सही मायने क्या होने I चाहिए? think one word. I think independence today is about tolerance. जी. Tolerance towards life, tolerance towards caste, tolerance towards religion, and tolerance towards gender. So I think it's just about tolerance today, क्योंकि वो उसने बैक सीट ले लिया है. So बिल्कुल. Hi, John. एंड Hi, एक John. नहीं, मेरा निखिल जी से एक सवाल है, जो कि हमारे एंकर ने स्टार्टिंग में कहा था. ये बिल्कुल सही है कि जब भी एनकाउंटर्स हुए हैं, हमारे देश में जितनी भी एनकाउंटर्स हुए हैं, कोई भी साफ सुथरा नहीं हुआ है. उसके हमेशा 2 पहलू रहे हैं और उस पर हमेशा एक शक होता है. पुलिस पर हमेशा एक सवाल उठता है कि ये फेक था, ये पर्सनल इंटरेस्ट से किया गया था, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा था. तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? आपने इस पर एक 4 साल बाटला हाउस पर आपने एक 4 साल एक गहन इस पर रिसर्च किया. आपको क्या लगता है कि कोई भी एनकाउंटर कभी कोई बहुत ही क्लीन या साफ-सुथरा नहीं साबित हुआ है? मैं सिर्फ बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है. और ये जो एनकाउंटर हुआ था, जो 19 सितंबर को हुआ था, उसके बाद जो सारे जो क्वेश्चंस, जो वर्जन्स निकले, वो इस वजह से थे, क्योंकि काफ़ी जो है साइड्स लिए गए. पॉलिटिकल पार्टीज ने जंप कर दिए, दे एंटर्ड इनटू द फ्रे,
एंड एक एक जो एक जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर को मार्टर किया गया था वो सब भूला गया और सारे सारे क्वेश्चंस एक पुलिस फोर्स पे आ गया. It's very easy for us to when I did D-Day and like Madhu said, when Madhu said that after doing D-Day we felt a little backlash because I had to get security because of the threats that I was getting for making a film like D-Day. And for 3 years I had security after that. But I remember meeting a very senior police officer in Bombay and in Mumbai, and he said, you know, everybody talks about the stuff that we get wrong. Nobody talks about the stuff that we get right. You know, and if we did not get stuff right every single day, this country would not be what it is today. And I think John. that is what there are too many other forces at play, which is something that deviates from what was the real reason for that encounter. Hi, John, sir. Hi, We'll take John, आखिरी sir, on दो the सवाल. left. John, On John your here. left. Towards John, your sir, right. on your left. Towards your right. अरे John. देख Towards your extreme left. Right. On your left. सर पूछ लो आप. John, hi. रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. जॉन, जैसे कि आप लोग बता ही रहे हैं कि 2008 का जो बाटला हाउस एनकाउंटर था वो रियल था और बहुत कंट्रोवर्शियल था, इसलिए आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है. लेकिन डज इट बॉदर यू जो कंट्री में इतने सारे एनकाउंटर्स होते हैं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन सबसे ज्यादा होता है. तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ सेंसिटिव आर्टिस्ट, क्या ये चीज आपको कभी परेशान करती है, या लोग यूं तो जनरलाइज करने लगते हैं कि ये एनकाउंटर सही था तो सब कुछ सही होगा, इंडिया में कुछ भी गलत नहीं है, ये चीज आपको परेशान करती है कभी? Are you talking about encounters between cops and this, or general communities and the atrocities that are happening? नो, पुलिस एनकाउंटर्स और बहुत सारे इस तरह के एनकाउंटर्स जो होते हैं और हर एनकाउंटर को सही बताया जाता है, ह्यूमन राइट वायोलेशन. Human right violation on which? नहीं, अगर Be फेक specific. एनकाउंटर है तो ह्यूमन राइट नहीं, आप वायोलेशन. Tell me specifically which one are you talking about? Are you Both, talking about Rohingyas that's happened right now, or are you talking about what? Tell me anything, I'll answer all your questions. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जो पुलिस एनकाउंटर मेजरली होते हैं. इंडिया में बहुत सारे पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को, इनोसेंट लोगों को भी मारा जाता है. हालांकि बाटला हाउस आप लोग बता रहे कि नहीं है ऐसा कुछ भी. दैट आई एग्री, बट We can what about speak- others? We can speak about our story. The other encounters, nor do you know the facts, nor do we know the facts. So how can I stand here and comment about it just because I've got a platform to do so? I can't do that. You know? Uh, Now we are moving away from it. I've got a lot to say about it, but we're really moving away from it. Let's speak about Batla House. I can sit here and talk to you about everything across this country, from Ansari to everything, but we're talking about Batla House, so let's stick to that, yeah? Bhushan One ji, last question. Bhushan ji and Bhushan ji. Let the lady go and then I'll come to you. Come. मैडम, मतलब सवाल दिया मैंने. You have to tell me. I don't know whether it's raining or not raining. I really don't know. I'm standing on stage. Wish, matlab, I wish we get the World Cup back, yeah? I mean, what do you want me to say? You want me to say we don't want to get it? I just... The whole country is giving them good wishes, and I also wish the same, that India wins the World Cup and we get the World Cup home. Yay. All right. One last question, Ji. Bhushan ji and John, a question common to both of you. How important do you think has it become for actors today to have a festival or a holiday release? And plus, how do you think the screen numbers would be divided between Saho, Batla House, and of course Akshay Kumar's Mission Mangal? See, we have altogether in India 5,500 screens roughly. So obviously we will try for the best. So around 2,500 screens. So let's see how the things are divided and all. John, your take, how important is a festival or a holiday release for you? Yeah, I think a holiday always gives you a bigger opening. Simple. I mean, you do the math, either way, it gives you a larger opening because it's a holiday. And I think it's important to release a film on a good day. You can release it on a vanilla weekend also, but it depends on the genre. Our film is very specific to Independence Day. It's a great date for us. We're releasing Batla House this year. We may release another sequel of mine next Independence Day. So we are very clear we want to release on
Independence Day. But 3 films business would be divided. Doesn't that concern you? It doesn't concern me about the other 2 films, but it concerns me about my. I'm asking about your film. Yeah, so we've done a math and we still want to release on this day, but more importantly, it's not overconfidence. So I must tell you, I have a lot of respect for every other film. I am very confident that Nikhil has made a fantastic film. So we are coming on a good day. जॉन आपने That's- 15 अगस्त को दर्ज करवा लिए क्या फॉर यू Yeah, good. Well said. Just bang it in. All the best. Thank you. Thank you so much, John, ladies once and again, gentlemen. once You again, guys once were again. superb. Give 10 yourselves a years. big round of 10 applause. 10 बोलो 10 years कहाँ गए? after Batla House, the residents of Jamia Nagar have said that this is like rubbing salt on their wounds because the residents were upset after the encounter and there were protests. So, what is your take on it? The Batla House, which had taken place in Jamia Nagar in New Delhi, after the encounter, protests had taken place in that region, and now the movie is coming out. The residents are still upset, and they are saying that it is like rubbing salt on our wounds. What your take on that? I request them to go and watch the film. Okay. Short and simple. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. And it's time for a final photo op, but we'd like to invite on stage a couple of very important people. And to start with, one of our favorite singers. Give it up for Miss Tulsi Kumar, ladies and gentlemen. She's lent her voice in the movie to one of the chartbusters, जो कि I'm sure बहुत जल्दी हम देखेंगे. Welcome, Tulsi. The co-producer of the movie. Give it up for Mr. Vinod Bhanushali, ladies and gentlemen. Yes, the man behind all this. Senior VP Films, T-Series, Mr. Shiv Chanana, Mr. Neeraj Roy from Hangama, and we also have another rock star over here, Mr. Kumar Mangat, ladies and gentlemen, one of the distributors. And member of the cast, Mr. Manish Chaudhary is here, so would also like to invite him on stage. Don't be shy.